Hello बच्चों, let's read this question. If J vector and E vector are current density and electric field respectively inside a current carrying conductor, then correct relation is. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है resistance R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity of the conductor, L is the length of the conductor, and A is the cross-sectional area of the conductor. We know from Ohm's law V is equal to IR. This is further equal to I into rho L upon A, since R is equal to rho L upon A. E into L is equal to I rho L upon A, since potential difference V is equal to E into L. This L and this L gets cancelled. E is equal to rho I upon A. This is further equal to rho into J, since J is equal to I upon A. Current in a metallic conductor. Current per unit area taken normal to the direction of current is called current density. करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया. एरिया हमें करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेना है. इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करेंगे और करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. हम फिगर में देख सकते हैं कि करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. जे वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है. हम फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी सेम डायरेक्शन में है. Let's write the vector form of the relation between electric field and current density. E vector is equal to J vector into resistivity. J vector is equal to 1 upon rho into E vector. 1 upon rho is conductivity sigma into E vector. J vector dot E vector is equal to magnitude of J vector into magnitude of E vector into cos theta. J वेक्टर और E वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 होएगा. मोड ऑफ J वेक्टर इंटू मोड ऑफ E वेक्टर इंटू cos 0. cos 0 1 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ J वेक्टर इंटू मोड ऑफ E वेक्टर. मोड से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आती है. J वेक्टर डॉट E वेक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. J वेक्टर क्रॉस E वेक्टर will be equal to mode of J vector into mode of E vector sin theta, and it will be perpendicular to both J vector and E vector. J vector और E vector दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा 0 होएगा. दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ J vector into mode of E vector into sin 0. sin 0 0 होता है, so J vector cross E vector will be equal to 0. Let's check the options. Option 1 says J vector is equal to sigma into E vector, which is correct. Option 2 says J vector cross E vector is equal to 0 vector. This is also a correct option. Option 3 says J vector dot E vector is greater than 0. This is also a correct option. So the final answer to this question is option 4, all of these. I hope you have understood the solution well. All the best.